Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss all about ICAI campus placement. So without wasting a moment, let's get started with the video. So every year after the CA results, ICAI announces a campus placement program. Basically यहाँ क्या होता है, there are various companies who visit the ICAI campus and they interview the eligible candidates in order to recruit them. So ICAI basically has created this platform wherein the companies can recruit eligible candidates and the candidates can get the job in their dream companies. Firstly हम discuss करेंगे what is the eligibility to apply for ICAI campus placement for this year. सबसे पहले जो लोग May 23 अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं और जिनकी आर्टिकलशिप अक्टूबर 23 से पहले ख़त्म होने वाली है, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम. अदर देन दीज पीपल, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नवंबर 22 रिजल्ट नेगेटिव आया था बट दे हैड अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड फिर वेरिफिकेशन के रिजल्ट में उनको पास रिजल्ट आया. So those who have cleared as a result of verification of marks post 31st Jan 2023, they can also apply for this campus placement program. Also जो लोग नवंबर 22 में क्लियर हुए थे बट जिन्होंने प्रीवियस कैंपस प्लेसमेंट में रजिस्टर ही नहीं किया था, they can also register for this campus placement. So now May 23 pass outs के लिए registration has already started from July 14 and it will end on 27th July. यूजुअली ICAI कोई भी एक्सटेंशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट डेट. सो मेक श्योर कि अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट में रजिस्टर करना है तो आप 27 से पहले कर दो. कैंपस प्लेसमेंट्स में रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरने पड़ेंगे विच इज़ 500 रुपीज़. सो ICAI कैंपस प्लेसमेंट के ना दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ द कैंपस फॉर द बिग सेंटर्स एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द कैंपस फॉर स्मॉल सेंटर्स. सो बिग सेंटर इंक्लूड्स अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, Delhi, Pune, Jaipur and Kolkata. And small centers includes Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Durgapur, Ernakulam, Indore, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Noida, Patna, Rajkot, Ranchi, Raipur, Thane, Vadodara and Visakhapatnam. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि कैंपस प्लेसमेंट्स के टाइमलाइन क्या होते हैं. सो फर्स्टली आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करोगे और जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है वैसे ही कंपनीज़ जो कैंपस प्लेसमेंट विजिट करने वाली है उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है. सो वंस योर रजिस्ट्रेशन एंड्स एंड वंस द कंपनीज रजिस्ट्रेशन एंड्स, कंपनी विल देन शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स. अब शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया ना इट डिपेंड्स ऑन एवरी कंपनी. कुछ लोग अटेम्प्ट्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ लोग मार्क्स देख के कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर लोकेशन के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं. ये शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल कंपनी. देन वंस द कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड, they will be notified by the ICAI on the campus portal. So you will get a list of all the companies who have shortlisted you. अभी यहाँ पे you will get to know the company, their location, the role that they are offering, the job description and the CTC that they are offering. So आपको जिन जिन companies ने भी shortlist किया है उसमें से you can give consent to only 4 companies. So assuming you have been selected by 10 companies, you cannot give interview in all the 10 companies. You have to make a choice and choose only 4 companies in which you want to apply. Also shortlisting के 2 rounds होते हैं. So after the first round of shortlisting, you will get the companies who have shortlisted you. You can give consent. Later on there is also a second round of shortlisting. उसमें भी there are some companies who can shortlist you. Once that ends, if there is any new company who has shortlisted you, that company will be added to your list. अभी फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग की कंपनीज और सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग की कंपनीज, इन दोनों के मिला के आपके टोटल 4 कंसेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. नाउ वंस यू गिव कंसेंट टू एनी 4 कंपनीज, लेटर ऑन यू विल हैव देयर इंटरव्यूज. देयर आर ऑल्सो सम कंपनीज हु कैन ऑप्ट फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट विच इज़ मोर लाइक एन असेसमेंट टेस्ट. सो डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं होगा. फर्स्टली यू विल हैव एन असेसमेंट टेस्ट
So after you give a consent to that company, you will have a psychometric test to pass. In case you clear in that test, then you will have an interview round. The test date as well as the interview date will always be mentioned in that list. So now certain things regarding the interview. The interview will be scheduled on weekdays between 9 a.m. to 6 p.m. and only the candidates who have given consent to the particular company will be eligible to give interview. Interview will be conducted on a virtual mode. It will be an online interview, and this online interview will be conducted on any platform which is comfortable for the organization. So after the consent and everything is done, around 1 to 2 days prior to the interview, there will be a roster which will be issued by ICAI of every specific companies. You need to go on the campus placement sites and check out for the rosters of the company for which you have given consent to. In these rosters, there will be a list of candidates for whom the interview is going to be conducted. And besides your name, you can also find out the time at which their interview is scheduled. Other than this, the organization will also contact you and they will also share the link with you through which you can attend the interview. Generally, it is advised that you go online 30 minutes before your scheduled time. You set up your laptop, check your Wi-Fi connections, check your audio, set everything up and wait for the interview. Also, if you have given consent to any company, it is compulsory for you to attend the interview. Hence, in case when you get the list of companies who have shortlisted you, if you think that you are not really interested in any of the roles or any of the companies which have shortlisted you, just do not give consent to any. But make sure if you are giving consent to them, you have to attend the interview. Once you're done with the interview, in case the company has selected you, the offer will be reflected on the ICAI campus site and you will be given a particular time to either accept the offer or reject the offer. In case you get an offer in one company, you accept it and later on you get another offer from another company with probably a better pay package. In this case, you cannot revoke the offer that you have given to the previous company. In case you accept the offer of a company and don't join that company, you will have to pay 5,000 as a commitment charge to ICAI. Once the big center campus ends, the small center starts. In case you are not selected in big center and if you wish to opt for the small center campus as well, you can do so. All the other details which I have shared regarding the big center also applies to the small center. ICAI campus placement is a wonderful opportunity that ICAI has provided to all the fresher chartered accountants. In case you are registering for the campus, make an optimum utilization of your time and gain this wonderful experience. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग ICAI कैंपस प्लेसमेंट और एनी अदर टॉपिक, just go and write it in the comment section below. And that's all for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना. ऐसे ही यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.